Maharaj ki Shri Rup Sanatan Bhakta Raghunashi Ji Gopal Bhatta Das Raghunath Shad Goswami Prabhu ki Nama Charja Srila Haridas Thakur ki Ananta Koti Vaishnavinde ki Prem se Goho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasaji Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Pancha Tattva ki Jai Shri Radha Krishna Gopina Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Navadvip Mayapur Dham ki Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamna Mai ki Bhakti Devi ki Srimati Tulsi Maharani Vrinda Devi ki Shri Radha Madan Mohan ki Shri Radha Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki Shri Krishna Balaram ki Patita Pavana Shri Sachinandana Gaur Hari ki Shri Gaur Nitai ki Kalata Shinga ki Hare Krishna Mahamantra ki Hare Krishna. We request all the devotees to please take their seats. Today we are going to begin the second day of Srila Prabhupada Memorial Festival, and we are going to hear from His Holiness Chandramauli Swami Maharaj. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj appeared in New Jersey in 1947. I remember once we told Maharaj that it is the same year when India became independent. He said, but I am teaching dependence on Krishna. Then Maharaj came in contact with Iskcon at the age of 24 in Denver, Colorado in 1973. And he began practicing Krishna consciousness in America, in New York City. And shortly thereafter, he began serving at New Vrindavan, West Virginia. He received initiation from Srila Prabhupada in 1973, and he served there in very austere condition. In 1973, and in 1986, he accepted sannyas order, and he began preaching in different parts of USA. And Maharaj thought that in this material world is a jail, and in that jail there are many people who are still in jail. So he started preaching in prison house, and he made the jails a very holy place. He became involved with the Iskcon prison ministries in America and began visiting the inmates, holding programs along with writing letters to the inmates and sending in Srila Prabhupada's books. So in this way he delivered many prisoners. In 1995 he began serving as the resident sannyasi in Chicago, where he is based today. And currently Maharaj is preaching all over the world, America, India, Western Europe, UK. He is an initiating spiritual master and has given shelter to thousands of devotees, and especially we Iskcon Ujjain devotees are very fortunate in this respect. Maharaj has a very deep loving relationship with His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, and there are many incidents which Maharaj shares. Last time he came, he was sharing the incidents in New Vrindavan, how the things were austere, but at the same time it was so wonderful time. So we are very grateful to Maharaj that he has kindly come here. And as yesterday His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj was mentioning that Maharaj will stay here at least 2 weeks. Haribo! At least 2 weeks. So we are very grateful to Maharaj for his love and care for, especially for Iskcon Ujjain devotees, and express our heartfelt gratitude to him by chanting Hare Krishna Mahamantra.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Jai Radham Madhava Kunja Bihari
So I offer my respects to all the Vaishnavas, particularly my original spiritual master is here, Daiva Shakti. She brought me to Krishna consciousness in 1972 in New York. It's a wonderful story. She's telling me not to. There's some implications in this story, so better not say it. But, and of course, to all the other Vaishnavas, I offer my respectful obeisances, and I pray for your mercy that I can be able to say something that'll be beneficial. So we're following the verses as they are given. This is from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 5. The meeting of Nanda Maharaj and Vasudeva, and this is text number 8. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध पंचम अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, इसके अंतर्गत 8वां श्लोक। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Marha Vastabarana Kankuko Snisna Bhusitai Gopasamaya Rajan Nanupayana Panayaha Maharha Vastabarana Kankuko Snisa Bhusitahai Gopasamya Yurajan Nanupayana Panayaha Maharha Vastabarana Kankuko Snisa Bhusitai Gopya Samyaya Rajan Nanupayana Panayaha. Maharabhastra Bharana Kanjakoshnisha Bhushitaha Gopasamaya Yurajan Nanupayana Panayaha Maharabhastra Bharana Kanshukosnisha Bhusitaha Gopasamaya Rajan Nanopayana Panaya. Ladies.
cows. Maharaj, महाअर्ह, extremely valuable. अत्यंत मूल्यवान, Vasta avarana, वस्त्र आभरण, with garments and ornaments. कपड़ों तथा गहनों से, Kanchuka, कंचुकः, by a particular type of garment वृंदावन में पहना जाने वाला used in Vrindavan. विशेष वस्त्र अंगरखा, Usnisa, उष्णीश, with turbans. पगड़ी से, Bhusitaha, भूषिताः, being nicely dressed. अच्छी तरह सजे, Gopa, गोपाः, all the cowherd men. सारे ग्वाले, Samayayu समाययु, came there. वहां आए. Rajan, राजन, O king, हे राजन, Maharaj Pariksit, महाराज परीक्षित, Nana, नाना, various, अनेक प्रकार की Vayana, उपायना, presentations, भेंटें, Panayaha, पाणयः, holding in their hands. हाथ में लिए हुए. Translation. This is Sukadev Goswami speaking. O King Pariksit, the cowherd men dressed very opulently with valuable ornaments and garments such as coats and turbans. Decorated in this way and carrying various presentations in their hands, they approached the house of Nanda Maharaj. अनुवाद. हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे. इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आए. Prabhupada's very short purport. When we consider the past condition of the agriculturalists in the field, in the village, we can see how opulent he was simply because of agricultural produce and protection of cows. At the present, however, agriculture has been neglected and cow protection given up. The agriculturalist is suffering pitiably and is dressed in a niggardly torn cloth. This is the distinction between India of history and the India of the present day. By the atrocious activities of Uga Karma, how we are killing the opportunity of human civilization. तात्पर्य. जब हम देहात के खेतीहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गौवों की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गोरक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतीहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है. प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है. उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को खो रहे हैं. Om Agyan Timidandasya Ginajana Salakaya Chaksu Ungalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpa Tarubhischa Viva Sindhu Peva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Now, Srila Prabhupada wants to make a very strong point here of the difference between what is ideal culture and what is now being brought in as some semblance of human civilization. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें ये भेद बता रहे हैं कि एक आदर्श संस्कृति कैसी होती है और आज मानव सभ्यता के नाम पे हमारे सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है.
Srila Prabhupada addresses this point many times, especially in the Srimad Bhagavatam first canto. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इस बात को कई बार सामने लाते हैं. And I'll read from one verse from the first canto, 8th chapter, verse number 40 in the purport. It goes on to say, human prosperity flourishes by natural gifts, not by gigantic industrial enterprises. श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय से यहाँ पे एक उद्धृति दी जा रही है कि मानव सभ्यता भगवान के द्वारा प्रदत्त उपहारों से फलती फूलती है, बल्कि किसी कृत्रिम उपादानों से नहीं. The gigantic industrial enterprises are products of a godless civilization. बड़े स्तर पे औद्योगिकीकरण ये निरीश्वर सभ्यता का द्योतक है. And they cause the destruction of all noble aims of human life. और इससे मनुष्य जीवन के समस्त उच्च उद्देश्यों का ह्रास होता है. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, जितना अधिक हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं, उतना ही अधिक मनुष्य की जीवनी शक्ति को चूस लिया जाता है. and I'll end here, the more there will be unrest and dissatisfaction of people in general. इसकी वजह से साधारण लोगों में अधिक से अधिक कठिनाइयाँ और अशांति देखने को मिलती है. So we're hearing in this particular section how the cowherds, those who are Vaishyas, those who take care of cows, and then particularly in Krishna's family, here how they were opulent in all sense of the term. यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से जो कृष्ण के वंशज हैं, जो सारे ग्वाल वाले हैं, ग्वाल बाल हैं, ये कितने अधिक धन से समृद्ध हैं. Valuable ornaments, beautiful garments, nicely dressed. इन्होंने बहुत ही सुंदर अलंकार एवं वस्त्र धारण कर रखे हैं. Wealth is actually land, cows, precious metals. वास्तव में धन संपदा होती है दूध का होना, गायों का होना. And we have paper money. किंतु आज के समय में हमारे पास कागज के नोट हैं. That's what it is, paper. ये वास्तव में कागज से अधिक और कुछ भी नहीं. And because the particular government in charge says it has value, it has value. और चूंकि कोई विशिष्ट सरकार कहती है कि इसका कोई मूल्य है, अतएव इसका मूल्य है. But it doesn't really have value. It's just been given value by a particular political rule. That's all. किंतु वास्तव में ये मूल्यहीन है और किसी विशेष राजनीतिक दल ने इसका कुछ मूल्य धारण किया है. I remember when I was in India in Mayapur 2016, beginning of 2017. 2016-17 के शुरुआत में एक घटना महाराज बता रहे हैं. And our Prime Minister, Mr. Modi, he decided to call back some of the larger bills in the Indian currency. तो मुझे स्मरण है 2016 के समय में भारत की सरकार ने जो बड़े नोट हैं इनको बंद करने का फैसला लिया था. To stop the trafficking of black marketing. जिससे कि नोटों की कालाबाजारी को बंद किया जा सके. So at one point, some of the larger bills, I think it was the 1,000 note and 500 note, became useless. तो अचानक रातों रात 1000 और 500 के नोट का मूल्यहीन हो गया. And the only way you could evaluate or validate the fact that you had money is that you had to prove that whatever you had in these denominations were earned by you. Otherwise, they wouldn't accept it. और सरकार के अनुसार यदि किसी के पास ये नोट उपलब्ध हो तो उसे उनकी कमाई का स्रोत उसकी घोषणा करनी होगी, अन्यथा वो मूल्यहीन माना जाएगा. And we were witness, people were burning piles of money in the street. Maybe some of you are here to see that. तो हम लोगों ने देखा उस समय लोग बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए थे. No, it's paper. That's all it was. ये केवल कागज का एक नोट मात्र था, कागज का एक टुकड़ा मात्र था. So we live in now and we're moving towards a direction in society where
natural living is be considered to be a form of impoverization. तो हम ऐसी सभ्यता में निवास कर रहे हैं जहाँ पे साधारण जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो रहा है. But here we see not only is it something sought after, but something actually of quality in life. किंतु यहाँ पर हम देखते हैं वास्तव में ये बहुत ही उच्च स्तर का जीवन यापन है. Cows and land. गौवों के आसपास का जीवन. Srila Prabhupada, before he left, and even a few years before that, he said 50% of my mission is incomplete. श्री प्रभुपाद ने अप्रकट होने से कुछ दिनों पहले कहा था कि मेरा 50% मिशन अभी भी बाकी है. We have to establish this Varnashram Dharma. हमें वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित करना होगा. And the only way you can do that is we have to develop farm communities. और इसको करने का एक बहुत मजबूत माध्यम होता है खेतीबाड़ी. And in the Western countries, it is a real difficult, especially for devotees, to move in that direction. They find it impractical or very difficult to enunciate, to develop, to bring it about. और कई भक्तों के लिए इस प्रकार की खेतीबाड़ी करना व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन देखा जाता है. But in 1973, Srila Prabhupada made a very strong statement. किंतु 1973 में श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही शक्तिशाली वक्तव्य दिया था. And he was seeing the deterioration of modern Western industrial civilization. श्रील प्रभुपाद आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के दुर्दशा को देख रहे थे. In 1973, he said, in 50 years, the whole Western civilization will collapse. तब उन्होंने 1973 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 50 वर्षों में पूरी पाश्चात्य सभ्यता ध्वस्त हो जाएगी. Of course, if those of you in India, you don't see it, but I see it. Those of us coming from the West, it is collapsing fast. भारत में शायद आप लोगों को इसका अनुभव नहीं है, किंतु जो पाश्चात्य देशों से आ रहे हैं जैसे कि मैं, हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. And that's what Prabhupada said, in order to establish the future of our society and to live according to what is practical for executing Krishna consciousness, we have to become self-sufficient. तो यदि हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना होगा और सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि स्वायत्तता की ओर ध्यान देना होगा. He said, grow your own food. श्रील प्रभुपाद ने कहा था आपको अपना भोजन खुद उगाना होगा. And he said the food you grow on your own farms is 100 times more nutritious than what you buy in the common market. और अभी मार्केट में जो कुछ भी उपलब्ध है ये वास्तव में हमारे खाने योग्य नहीं है. And that is actually being seen today by people's health barometer is going down just simply by eating. और देखा जा रहा है कि जनसाधारण की तबीयत बहुत नीचे स्तर पे जाती है क्योंकि ये सब केवल दूषित भोजन को ग्रहण करने के कारण है. Prabhupada said, grow your own cotton, make cloth, silk, and make your own clothes. श्री प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा था कि हम अपना कपास भी खुद उगाएं और अपने कपड़े भी खुद बुनें. Learn herbs, learn how to apply the herbs for medicine. You can deteriorate or diminish the dependence on outside doctors. श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा था कि हमें चिकित्सीय पौधों को उगाना चाहिए और डॉक्टर के ऊपर, वैद्य के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहिए. You want to hear something really startling? This is a common statistic that is now being advertised. तो आजकल इसी बात का प्रचार किया जा रहा है और ये बहुत स्पष्ट है. Of course, it's in the United States of America. खैर ये अमेरिका के ऊपर ज़्यादा लागू होता है. But the statistic is 15,000 people per month are dying because of the cure that they receive from the doctors. किंतु आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष 15,000 लोग सिर्फ वैद्य के द्वारा दी गई दवाओं का सेवन करने से मारे जाते हैं. You buy medical insurance, you get sick, you think, oh, now I have the money I need to get cured, and the doctor kills you.
ये पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रयोग करते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब मेरे पास पैसा है और फिर डॉक्टर इनको मार देते हैं। This is not some conspiracy theory, it is on mainstream. ये कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है, ये तो खुलेआम चल रहा है And it's causing a great alarm also. और ये बहुत ही विकटजनक स्थिति है। Now, Prabhupada said, learn herbs, make medicines, live simply according to how Krishna lived. श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि चिकित्सीय पौधों का व्यवहार करें, उनका उपयोग करें और इनका प्रयोग करके सभी बीमारियों से दूर रहें। And then Prabhupada gave a fourth principle. He said, build your own homes. He said, build your own houses. श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि हमें अपने घरों का निर्माण भी स्वयं करना चाहिए। I was in New Vrindavan. Prabhupada came 1974, I believe, or 76. मैं न्यू वृंदावन में था, श्रील प्रभुपाद वहाँ पे 1974 या 1976 में आए थे। Well, Prabhupada was telling us, you're here on a very natural way of living. Build your own houses. You have all of the ingredients you need. श्रील प्रभुपाद ने कहा था, आप बहुत प्राकृतिक नैसर्गिक स्थान में रहते हैं, अपने खुद के मकान बनाइए और आराम से रहिए। So he said, Prabhupada, what kind of houses should we build? हमने प्रश्न किया, श्रील प्रभुपाद हम कैसे मकान बनाएं? We wanted some guidance. हमें कुछ निर्देश चाहिए। So Prabhupada said, all right, give me a pencil and some big paper. प्रभुपाद ने कहा मुझे पेंसिल दो और बड़ा कागज दो। So Prabhupada drew a structure. He drew something, we called it the Prabhupada house. It was a very simple design that he made. He said, make something like this. प्रभुपाद ने एक चित्र बनाया और उन्होंने कहा इस प्रकार का कुछ बनाओ, हम उस डिजाइन को प्रभुपाद हाउस कहते हैं। Perfect for a family of 4. इसमें 4 लोगों का परिवार बड़े आसानी से रह सकता है। So we were thinking, yeah, Prabhupada's got the vision, but we don't have the enthusiasm. हम विचार कर रहे थे, ओ श्रील प्रभुपाद के पास इतना बड़ा दृष्टिकोण है किंतु हमारे अंदर उत्साह नहीं है। It never manifested in New Vrindavan. और वास्तव में ये मकान कभी भी नहीं बना। But you can see, if you read and you can hear from Srila Prabhupada, he's really pushing a more natural way of living and complete distraction or pulling away from the dependency on Western civilization. किंतु यदि आप गौर से देखें तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य संस्कृति से दूर जाकर एक प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन यापन करने के लिए हमें कह रहे हैं। Because when one is engaged in devotional service, Krishna provides everything. क्योंकि यदि कोई भगवत भक्ति में लगा हुआ हो तो भगवान कृष्ण सब कुछ प्रदान करते हैं। Naturally. ये स्वाभाविक है। There's a particular constellation that appears in the heavens. It's not a very common constellation. It's called Swati. स्वाति नाम का एक नक्षत्र ऊपर आकाश में कभी-कभी दिखाई देता है, ये बहुत ही दुर्लभ है। And when it rains during the Swati manifestation, then the water on the head of a snake, it becomes jewels. और ऐसा कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात हो और वर्षा का जल किसी सांप के सिर पे पड़े तो वो अपने आप जवाहरात में मणियों में परिणत हो जाता है। When it falls on the head of an elephant, it becomes gems. और यदि किसी हाथी के सिर पे गिरे तो मोती बन जाता है। And if it falls in the ocean, it becomes pearls and it's taken by oysters. और यदि समुद्र पे भी गिरे तो भी इसका मोती बन जाता है। God is providing everything. भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। Prabhupada makes the point here that they've given up cow protection and agriculture, which is the basis of natural living. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इंगित करते हैं कि गौ रक्षा और खेती को छोड़ने के कारण हमारी दुर्दशा है। वृंदावन में हमारे पास बहुत सारी गायें, एक समय हमारे पास 550 गायें थी, which was a little hard to take care of. जिनकी देखभाल करना थोड़ा कठिन हो रहा था। But there were many devotees, and we were taking the milk and using it for the deities and also for the devotees, and taking the milk and selling it to the local commercial dairies. और इन गायों से इतना दूध होता था कि इनके उस दूध का प्रयोग हम भगवान की सेवा में भक्तों के लिए बल्कि उसको बाहर बेचा भी करते थे। And so keeping cows, it means, is the foundation for
not only for simple living or natural living, but actually for dharma. The cow represents the entire manifestation of all the demigods. तो गौ रक्षा करना ये सादा जीवन का ही द्योतक नहीं बल्कि गौ माता के अंदर समस्त देवताओं का निवास भी होता है, तो इसलिए इससे धर्म की रक्षा होती है। Just recently I was in America and I was speaking because I just finished a book. It's called Krishna's Way Natural Living, based on Srila Prabhupada's program for farm communities. तो मैं कुछ दिनों पहले अमेरिका में था और मैंने एक पुस्तक को पढ़ना समाप्त किया जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने And so I was speaking about cows. तो मैं वहाँ गायों के ऊपर बात कर रहा था। Benefits of keeping cow, how cow is actually dharma manifested. गौ रक्षा करने के लाभ और कैसे इससे ये वास्तव में धर्म का प्राकट्य है। So there was the audience was mostly people who had lived in India, now were living in the West. सभी श्रोता मूलतः भारतीय मूल के थे और अभी वो पाश्चात्य देशों में रह रहे थे। So one gentleman, he wanted to make a point. तो एक व्यक्ति कुछ बात कहना चाह रहे थे। He said, Maharaj, you know, cows are really amazing. तो उन्होंने कहा, महाराज गायें वास्तव में बड़ी अद्भुत होती हैं। I said, yeah, I agree. मैंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। And he told me, he said, when we were living in our little village there, we had a cow for our own little home, and if someone in the family got sick, then someone would go over to the cow and say, whisper in the cow's ear, this person is sick. And then the cow would go, and she would go looking around for that particular herb in nature. She would eat that herb, then they would milk that cow and use that milk to cure that person. इस व्यक्ति ने एक बहुत रोचक घटना बताई। उन्होंने कहा, हमारे घर में गाय थी और घर के सदस्यों में से यदि कोई बीमार पड़ता था तो अस्वस्थ होने पर हम जाके उस गाय के कान में ये बात कहते थे कि अमुक व्यक्ति अस्वस्थ हैं। उसके बाद वो गाय जाकर एक विशेष प्रकार के पौधे को खाती थी, फिर उसके दूध को निकालकर हम उस अस्वस्थ व्यक्ति को देते थे और उसका सेवन करने से वो स्वस्थ हो जाता था। I thought that was really amazing. तो ये वास्तव में बड़ी अद्भुत घटना है। And then I told that same pastime or message at another gathering, and someone said, well, Maharaj, it's not exactly like that. और मैंने ये घटना एक दूसरी सभा में भी बताई तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। You don't even have to tell the cow. She knows who's sick and she'll do it herself with either. आपको गाय को बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन बीमार है। गाय अपने आप ही इस प्रकार का पौधा खा लेती है और उसके दूध का प्रयोग आप बीमारी को दूर करने के लिए करते The हैं। cow is a family member. It's not just an animal that's there to provide what you need. Member of the family. क्योंकि गौ माता सिर्फ एक ऐसा पशु नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि ये परिवार का एक सदस्य है। When she's cared for like that, she feels that love coming and she also responds. जब गौ माता का ध्यान हम इस प्रकार से रखते हैं तो वे भी प्रेम का विनिमय करती हैं। So this is civilization, as Prabhupada is making the point here. तो ये वास्तविक सभ्यता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इंगित करते हैं। So we're trying at least to somehow or other make awareness, especially in Western countries. Here the foundation is already established and devotees are moving in that direction, but still there's a lot of work to do. विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में हम इसके बारे में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में ये समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सब लोग इस बात को जानते हैं। It says Lakshmi Devi, she exists within the dung of the cows, none different. तो लक्ष्मी देवी गौ माता के गोबर में स्वयं निवास करती हैं। Of course, I don't have to mention it here. In India, everyone knows. But in the Western civilization, people don't even know what a cow looks like. खैर भारत में बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सब लोग सब कुछ जानते हैं, किंतु पाश्चात्य सभ्यता में जाके बताना पड़ता है कि गाय कैसी दिखती है। So when we talk about the benefit of caring for cows and what cows can offer to human society, human consciousness, human development, they're astonished.
जब हम लोगों को ये बताते हैं कि किस प्रकार से गौ रक्षा करने से मानव सभ्यता को बड़ा लाभ होता है, तो ये लोग सुन के अचंभित हो जाते हैं। Simply by walking on the fields, the cow actually fertilizes the ground. केवल मैदान पर घास चरने से गौ माता पूरे मैदान को उपजाऊ बना देती है। You have a goshala here, right? यहाँ पे गौशाला है ना? So you're all set. You should preach this message everywhere because people are too much dependent on this, what we say, soul-killing civilization, as Prabhupada wants to make that point. हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग आत्मा को मारने वाली सभ्यता के ऊपर बहुत अधिक निर्भरशील हैं। Simple living, high thinking, Prabhupada said. श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, सादा जीवन उच्च विचार। Western civilization is high living and no thinking. पाश्चात्य सभ्यता यानी कि ऊंचा जीवन और कोई विचार नहीं। Too busy living to think. ये जीने में इतने व्यस्त हैं कि विचार करने का समय नहीं And I है। even see devotees, especially in the Western countries, maybe even here now, get caught up in so many things just to maintain themselves. और विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि भक्त अपनी जीविका को चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बल्कि भारत में भी ऐसा देखा जा रहा है कि वे और सब कुछ भूल जाते हैं। And there's no quality time for hearing and chanting the glories of the Lord, associating with devotees. और भगवान की महिमा मंडन करने का समय नहीं मिलता, भक्त की संगति करने का भी समय नहीं मिलता है। And Prabhupada pushed this really strong in the last year. और श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम वर्ष में इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था। But unfortunately, it's not a priority, at least in our society. It should be. किंतु हमारे समाज में ये दुख की बात है कि हमारे समाज में ये अभी भी वरीयता नहीं है। For whatever reason, I won't go into that. But the point is that as we develop this more natural lifestyle, Prabhupada said, as Western civilization collapses, people in general, we were looking for some shelter. They'll come to our farms and we can engage them in varna. We can engage them in occupation. तो यद्यपि ये अभी प्राथमिकता नहीं है, किंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम लोगों को इस प्रकार से सेवा में लगाएं तो लोग धीरे धीरे देखेंगे कैसे पाश्चात्य सभ्यता ध्वस्त हो रही है, और यहाँ पे हम उनको वर्ण के अनुसार And then gradually नियोजित कर introduce सकते them to Krishna consciousness. और फिर धीरे धीरे उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जा सकता है। So we're seeing that actually even now people are, from what I'm experiencing and traveling in, especially in the UK and in the US, people are really distancing themselves from the Western society more and more and looking for an alternative type of lifestyle. We have the message. तो अपने भ्रमण में मैंने ये देखा है कि विशेष रूप से अमेरिका और इंग्लैंड में लोग इस पाश्चात्य संस्कृति से दूर जाना चाहते हैं, और हमारे पास उनको देने के लिए बहुत अच्छा संदेश है। But it's up to us to show the example, and by not only by our own lifestyle, but providing whatever people need. बल्कि हमें अपना दृष्टांत प्रस्तुत करके ये दिखाना चाहिए कि ऐसे जीवन यापन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। But then again, we hear the opposite argument that it's too difficult to establish these things. We've tried it in the past. There's many projects that came. People were enthusiastic. There was a lot of energy in that direction, but now it's not happening. किंतु हम इसके विपरीत तर्क सुनते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, बड़ा कठिन है, पहले भी इसके ऊपर प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है। And that's where the varnashram comes in. और यहीं पे वर्णाश्रम की भूमिका आती है, Daivi varnashram. दैवी वर्णाश्रम। And that is to educate, Prabhupada said, establish these varnashram colleges. The Brahmins can teach the other avarnas, especially Kshatriya and Vaishya. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हमें वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना करनी होगी, जहाँ पे जो ब्राह्मण हैं वे क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा प्रदान करेंगे। That was Prabhupada's unfinished business, established his Daivi Varnashram. We actually have Varnashram, but it's not organized. वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, देखा जाए तो हमारे समाज में भी वर्णाश्रम है, किंतु ये बहुत सुनियोजित नहीं है। Many devotees are working according to their propensity, others are not, or natural propensity, but in a less organized way. कई भक्त अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा में रत हैं और कई नहीं भी हैं, तो इसको और सुनियोजित करने की आवश्यकता है।
Prabhupada's idea was to educate and train and then evaluate based on the education. श्रील प्रभुपाद का विचार था कि पहले प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाए. It's like there was one discussion between Prabhupada and one Gurukul teacher. एक बार श्रील प्रभुपाद और एक गुरुकुल के शिक्षक के बीच में वार्तालाप हुआ. So the Gurukul teacher was giving Prabhupada a report on how the students were doing. Prabhupada was asking questions about what time they get up, what do they eat, what do they do. These are young boys. I think it was the Vrindavan Gurukul at this time. मुझे लगता है वृंदावन गुरुकुल की एक घटना है. वहाँ के शिक्षक बता रहे थे लड़के कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, और श्रील प्रभुपाद उनसे प्रश्न कर रहे थे. And then at one point the teacher said, well, there's one boy. He doesn't want to learn. He's always causing trouble in the class. He disturbs everybody. He's just hard to control. तो शिक्षक ने बताया कि एक लड़का है जो किसी की बात नहीं सुनता, कक्षा में बैठना नहीं चाहता, उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है. But Prabhupada said he's not meant for education. Put him on the farm. Let him do some work. प्रभुपाद ने कहा वो शिक्षा के योग्य नहीं है, उसको खेतीबाड़ी करने दो, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है. So to think we can train everyone as brahmanas might be a little bit, utopian. तो यदि हम ये विचार करें कि हर कोई ब्राह्मण है तो ये वास्तव में ख्याली पुलाव है. Yeah, so that other support system needs to be developed. Kshatriyas and Vaishyas. तो क्षत्रियों और वैश्यों को प्रशिक्षित करने के लिए सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता है. Training, education, and evaluation, and then engagement, of course. तो पहले प्रशिक्षण, उसके बाद मूल्यांकन और उसके बाद उन्हें सेवा में संलग्न करना, तीनों महत्वपूर्ण है. I made an attempt back in the year 2013 to establish Kshatriya Varna. मैंने 2013 में क्षत्रिय वर्ण को स्थापित करने का एक प्रयास किया था. And we had it going for a while. और कुछ दिनों तक ये चला भी था. But there was no Brahmins to control the Kshatriyas. किंतु ऐसे क्षत्रियों को नियंत्रित करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिले. If you put a bunch of Kshatriyas together, you know what's going to happen. Just a lot of disagreement. कई सारे क्षत्रियों का एक समूह बना दीजिए तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, केवल मतभेद. But the training sessions were nice. That was good. किंतु प्रशिक्षण के जो पाठ्यक्रम था वो बड़ा ही रोचक था. And the word got around Iskcon what we were doing, and we were getting fired on by saying you're trying to make Sudras into Kshatriyas. और पूरे इस्कॉन में खबर फैल गई और हमारे ऊपर बड़ा दबाव आया कि आप शूद्रों को क्षत्रिय बनाना चाहते हैं. But we had actually devotees who were quite well versed. We just needed to get the foundation in the form of Shastric knowledge as a foundation for developing the whole principle. किंतु ऐसे That was forthcoming, but that hadn't come at that point. किंतु ऐसे कई भक्त थे जो वास्तव में इसके लिए तैयार थे और उनको शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से ठीक प्रशिक्षण दिया जाने से वो तैयार होते, किंतु वे उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए. So we're still working on it. तो हम अभी भी इस पर 10 कार्य कर रहे years हैं. later. 10 साल बाद आज भी हम इस पर And काम it's कर actually रहे हैं happening in some places. और कुछ स्थानों पे ये हो भी रहा है. And Prabhupada said once we can establish this Varnashram dharma, at least in a qualitative way in many places, then Krishna consciousness will spread so fast all over the world. श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा था कि यदि हम वर्णाश्रम को गुणात्मक रूप से स्थापित कर दें तो पूरी दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत जल्दी जल्दी होगा. Okay. So there's a lot to be mentioned on this in a practical sense. So, तो इसके ऊपर बोलने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ है. but you can see how Srila Prabhupada is feeling so, what's the word? Unhappy about the present civilization, particularly how the glorious country of India, where Dharma is actually the foundation, is going to karma instead of Dharma. यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से भारतीय सभ्यता की मौजूदा परिस्थिति पर बड़े निराश हैं क्योंकि अभी ये धर्म से कर्म की ओर जा रहा है. Okay, anyone would like to make a comment, questions, किसी की कोई टिप्पणी है या कोई प्रश्न है? any points? That'd be shocking. People bring a microphone. You do preaching in the prisons. Has there been any result from that where the prisoners become devotees? Yeah. आप जेल में प्रचार करते हैं तो क्या ऐसा देखा गया है कि जेल जो कैदी हैं ये भक्त बन रहे हैं?
but most of their devotional activity stays within the prisons, and they actually become very serious. हाँ, ये भक्त बनते हैं, किंतु भक्ति के अधिकांश कार्यकलाप कारागार के भीतर ही सीमित रहते हैं। I can tell one story that's quite amazing. मैं एक कथा बताऊंगा, एक वृत्तांत कह सुनाऊंगा जो बहुत रोचक है। I can't mention the country because Iskcon's not allowed to preach in that country. मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस्कॉन को वहां पे प्रचार करने की अनुमति नहीं है। You might guess what it is. आप अंदाजा लगा सकते हैं। So we had one devotee who actually got the position of the Hindu chaplain within the jail. तो हमारा एक ऐसा भक्त था जिसको कारागार के अंदर हिंदू पुजारी बनने का अवसर दिया गया था। And so he at one point said to the jail administration, is there anyone that you know of would be interested in hearing of our teachings of Bhagavad Gita? Anybody who has that background or anyone? तो उन्होंने एक बार जेल प्रशासन से प्रार्थना की कि क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी शिक्षाओं को, भगवद गीता की शिक्षाओं को सुनने में रुचि दिखाएगा। And they said, yes, we have one man. He's on death row. He's about to be executed in about a couple months. तो उन्होंने कहा हाँ, एक व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड मिलने वाला है, कुछ महीने बाकी हैं। So he was from the Hindu culture. He came and he started coming to our Bhagavad Gita classes. तो वो व्यक्ति हिंदू सभ्यता से था, वो हमारे भगवद गीता की कक्षाओं में आने लगा। And before then, he was denying everything that was being charged against him. और इसके पहले उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वो खारिज कर रहा था। Even when his parents would come, he would say that I'm being unfairly punished. जब उसके माता पिता उससे मिलने आते तो वो कहता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। But then after coming to the classes, hearing Bhagavad Gita, actually getting absorbed and learning more and more, he changed completely. किंतु जब से वो भगवद गीता का प्रवचन सुनने लगा, वहां पे आने लगा, उसके बाद वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। He admitted what they accused him of was true. उसने स्वीकार किया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप सत्य हैं। Became humble, really humble. और वो बड़ा विनम्र हो गया। And now he would keep the Bhagavad Gita with him all throughout the whole day. और अब वो अपने साथ भगवद गीता को 24 घंटे रखता था। He literally fell in love with Bhagavad Gita. वो भगवद गीता से प्रेम करने लगा। And then, of course, the time for his execution came. तत्पश्चात उसको मृत्यु दंड देने का समय आ गया। And now his fear was all gone. और उसका भय दूर हो चुका था। Understanding that he is not this body. वो समझ चुका था कि वो शरीर नहीं है। And if he practices Krishna consciousness now, he'll get a good chance in his next life to be a devotee. और यदि वो कृष्ण भक्ति का अच्छे से अभ्यास करे तो अगले जीवन में भक्त बनने का अवसर मिलेगा। So when they were going to take him away, he made a request to the jailers. तो जब उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला था तो उसने एक प्रार्थना की, When you take me away for execution, can I carry the Bhagavad Gita with me? जब आप मुझे सूली पे चढ़ाएंगे तो क्या मैं अपने साथ भगवद गीता रख सकता हूँ? Because I want it to be with me in my next life. क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले जीवन में मेरे साथ रहे। So they said, yeah, no problem. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं। So he's walking, they're carrying it. Now usually, later on, they told us the story that usually have to drag the person. And he doesn't want to go. But this person was just walking, he was waving to his fellow inmates. I'm going to be devotee of Krishna in my next life. तो उन्होंने हमें बताया कि साधारण तौर पे मृत्यु दंड दिए जाने वाले व्यक्ति को घसीटना पड़ता है कि तो ये व्यक्ति हाथ हिला रहा था, बोल रहा था मैं कृष्ण का भक्त बनने वाला हूँ। Simply coming in contact with Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, he felt, there was hope. There was hope now, and in my next life, I'll be a devotee of the Lord. श्रील भगवपाद के भगवद गीता के संपर्क में आने से अब उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अगले जीवन में वो भक्त बनेगा। And then after, of course, the execution happened, the jailers came back and said, what did you do to him? We never saw that before. और मृत्यु दंड देने के बाद जेल प्रशासन के अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा आपने इनके साथ क्या किया, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। We gave him a Bhagavad Gita. We can, works for you too. तो हमने उन्हें भगवद गीता की कॉपी पकड़ाई और कहा आपके लिए भी काम करेगी। So yeah, that's one beautiful story actually. Just be completely fearless. I mean, not fearless, but fear-free. No fear at all. तो ये व्यक्ति पूर्ण रूप से निडर हो चुका था।
Now that's one quite powerful experience of preaching in jails. And many have a complete changeover in life. One of the common things that I hear is that they say the fact that I came to jail was good because I met the devotees, I met Krishna consciousness. तो जेल में प्रचार करने से कई बार मैंने ऐसा सुना है कि ये जो कैदी जिनको प्रचार किया जाता है वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ मैं जेल में आया, क्योंकि यहाँ पे आने से मैं कृष्ण के भक्तों से मिला और स्वयं भक्त बनने का अवसर प्राप्त किया. They say if I wouldn't have came to jail, I probably would have never took up this. वे ये भी कहते हैं कि यदि मैं कारागार में न आया होता तो शायद मैं इस पद पर कभी नहीं चलता. Yeah, there was one other boy. Now I'm still in contact with him. He, when he was 5 years old, he saw the devotees in Germany when the devotees were preaching or doing Harinam Sankirtan in one airport in Germany. तो मैं अभी भी एक लड़के के संपर्क में हूँ जो जब 5 वर्षों का था तो उसने जर्मनी के हवाई अड्डे पर भक्तों को हरिनाम संकीर्तन करते देखा था. So he remembered that. तो उसे ये बात स्मरण थी. Now he grew up in a very, very strict Christian family. और वो एक बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन परिवार में पला बड़ा था. And he was also very devout Christian. और ये बहुत ही अच्छा क्रिश्चियन था. So finally he wound up in jail. किसी कारणवश वो कारागार पहुंच गया. And the situation is quite complicated how he was forced to go to jail. और ये परिस्थिति बहुत ही जटिल है, कैसे उसे कारागार में जाना पड़ा. It was self-defense. आत्मरक्षा के चलते उसे वहां जाना पड़ा. But because he killed a police officer in self-defense, the government covered up the whole thing because they didn't want to implicate the police officer. तो चूंकि आत्मरक्षा के अंतर्गत उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था तो सरकार ने उसे जेल में डाल दिया. So he's in jail now, but now he's preaching, he's chanting 32 rounds a day. वो अब जेल में है किंतु रोज 32 माला जप करता है. Making other inmates Krishna conscious. दूसरे कैदियों को कृष्ण भक्ति का प्रचार But करता at है. one point in his early part of his jail sentence, he became so despondent, lost all hope for anything, and he was about to commit suicide. किंतु जेल की सजा के शुरुआती मियाद में उसे इतना अधिक निराशा हुई थी कि उसने सब प्रकार की उम्मीदें छोड़ दी थी और वो आत्महत्या करना चाहता था. One of his fellow inmates happened to have the book coming back. किंतु उसके कैदी मित्र के पास पुनरागमन पुस्तक थी. And he gave it to him. He said, read this. और उन्हें उसे पुस्तक दी, कहाँ पढ़ो. After reading that book, his whole mind changed. उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरा मन बदल गया. And then he became really interested and he wanted to hear more. Fortunately, there was some connection. He started getting Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam copies and other books. और फिर वो और सुनना चाहता था और उसे गीता भागवत इत्यादि की प्रतियां प्राप्त हुई. He's doing wonderful preaching. He's making other inmates Krishna conscious. और वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, वो दूसरे कैदियों को कृष्ण भक्त बना रहा है. But the problem with jails is if you become too effective, then they move you to another jail. किंतु कारागार की समस्या है, यदि आप बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएं तो आपको दूसरे कारागार में स्थानांतरित कर दिया जाता They है. want to break your influence. So wherever he goes, this is the second or third time he's been moved, but he preaches wherever he goes. तो इस व्यक्ति को 2-3 बार स्थानांतरित किया जा चुका है, किंतु वो जहां भी जाता है वो प्रचार करता रहता So है. he's a traveling in jail sannyasi. वो कारागार में भ्रमण करने वाले एक सन्यासी के समान है. It's one of the new ashrams. ये एक नए आश्रम के सदृश है. And the jail population is increasing around the world. और पूरी दुनिया में कारागार में जनसंख्या बढ़ती जा रही है. We have our Sarvadrik Prabhu here. He's been preaching in jails for many, many years. यहाँ पे सर्वाधिक प्रभु उपस्थित हैं जो कि पिछले कई वर्षों से कारागार में प्रचार करते हैं. And by his influence and by his arrangement, I've also got into jails to preach because of his ability to get people into jails. और उनके प्रभाव और उनकी व्यवस्था से मैं भी इस जेल के प्रचार में So he's done amazing jail preaching and actually even making people devotees. वास्तव में प्रभु के प्रचार से कई सारे कैदी भक्त बन रहे हैं. So yeah, it's going on, and there's more and more people who are in these
confinement places who are actually practicing Krishna consciousness. तो हाँ, ये आगे बढ़ रहा है और इन स्थानों में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने वाले कई लोग हैं. Thank you. Anything else? Do we have? कोई और प्रश्न? Should we end here? There is a question over there. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for nice class. मेरा प्रश्न यह है प्रभु कि जो गौ माता के ऊपर महाराज ने बताया, तो जो गाय अगर अभी रखते हैं तो उसको बच्चे पैदा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है. और जो मेल और फीमेल बच्चे होते हैं उसमें से मेल को जो है किसी गौशाला में भी नहीं रखा जाता है, उसको कसाई को या किसान को बेच दिया जाता है. पर किसान के भी अभी वो कुछ काम का नहीं है, तो वो अल्टीमेटली कसाई के पास जाता है. तो फिर हम वो क्या ये गौ रक्षा हम इस प्रकार से करना ठीक है? His question is, now when the cows bear offsprings, when they produce children, so the male, the bull, generally they are sold off. So they are sold off and they are slaughtered in most of the cases because they are not useful to the farmers also. So is it cow protection in its real sense? No, cow protection includes the bulls too. They're just male cows, that's all. नहीं, गौ रक्षा का मतलब है बैलों की भी रक्षा करना. No, they should be given some activity. The bulls can, plow the fields. They can also walk on the fields. And also, in order for cows to have babies, you need bulls, बैल खेतों में चल सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और गायों से बछड़े पैदा करने के लिए बैलों की आवश्यकता तो हमेशा ही रहेगी. Your point is well taken. The bulls are really more exploited or more giving a cruel punishment than the cows are. Both are, but the bulls are, they don't see any value in keeping the bulls at all. आपकी बात सत्य है कि बैलों के ऊपर ज्यादा क्रूरता दिखाई जा रही है. But we do. Therefore, we need to establish within our own society the example of taking care of cows and bulls more and more and teach people. तो हमें अपने समाज में गाय और बैल दोनों की रक्षा करने का दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए और लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए. So it is a big concern. Yeah. तो ये एक बड़े चिंता का विषय है. प्रभु इंजेक्शन वाली बात भी बताइए. और जो महाराज ने बताया है, तो हमारे इस्कॉन के भी किसी गौशाला में मेल और फीमेल दोनों को नहीं संभाला जाता है, तो उसके ऊपर भी महाराज का क्या? His question is, the cows are impregnated using injections. So that's why even in Iskcon farms, the bulls are not being cared for properly. So what is the remedy? Change, do it right. परिवर्तन आप करके दिखाइए. Well, if you see something that is less than ideal or wrong, then as devotees, we should understand what is the principle and what we should be doing according to what is natural. जब हमें आदर्श आचरण नहीं दिखता है तो substitute convenience for for what is supposed to be done properly, then we get something different. यदि हम आदर्श मानदंड से आचरण ना करके ऐसा कुछ करें जो कि सहज है, सरल है, तो ये ठीक नहीं है. We're too busy doing other things. That's the problem. हमारी समस्या ये है कि हम दूसरे काम करने में बहुत व्यस्त हैं. Everything's necessary, but this is one part of our development of our culture, society, that is being neglected. देखिए, हर बात महत्वपूर्ण है, किंतु एक आदर्श समाज में हमें इस व्यवस्था को फिर से लाना होगा. Or compromised. हमें समझौता नहीं करना होगा. Thank you for making that point. बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए. Prabhupada ki जय. Srimad Bhagavatam ki जय. Gaur Premanand.
Hari Hari Bol. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful presentation related to Varnashram Dharma and cow protection. We would like to express our gratitude to Maharaj in few words. Simple and natural living, basis of good civilization. For that we need to promote agriculture and cow protection. Wonderful qualities cows have: milk curing disease or cultivation. Serving cows, principle of dharma, will bestow spiritual perfection. Maharaj mentioned Western worlds full of ignorance, running for temporary destination. Vedic culture is the solution which will bestow real perfection. Spiritual training, education with evaluation, Krishna consciousness can bring revolution. Dear Maharaj, Srila Prabhupada's these teachings, Your Holiness always share. To apply these, we beg for your blessings, love and care. His Holiness Chandramauli Swami Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. So express our gratitude to Maharaj by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Jai. Bhakti Charu Swami Maharaj ki. Jai. So now is the time for breakfast. We request all the devotees to please honor breakfast prasadam, and then we request them to please assemble till 10 a.m. We will start our morning session on Srila Prabhupada Katha. The first session will be given by His Holiness Bhakti Prabhav Swami Maharaj. We have 45-minute session. Next session will be given by His Holiness Bhakti Vijay Bhagavad Swami Maharaj. He yesterday arrived, so we welcome His Holiness Bhakti Vijay Bhagavad Swami Maharaj ki. So we request all devotees to please be on time. Hare Krishna.